Hello students, how are you? I hope you all will fine. So the pandemic situation is now going on, and I was informed by the college that you all are waiting for English class. Due to COVID situation and the critical situation created by COVID-19 in our area in Udala town or in Mayurbhanj district, especially in Udala, I could not attend your class. I could not take your class, for which I am very much worried about it. Okay, so students, so many days already passed. Either you meet us or we, the teachers of the college, meet you. It's a very sad position, sad situation, but we cannot do anything about this matter, because the government of India, the government of Odisha now already depressed about this COVID disease situation, how to control. They just thinking how this type of pandemic situation, how this type of infectious disease, contagious disease, viral disease can be controlled. The government of India, the government of Odisha, both are thinking every day. Now in Odisha, this disease, this dangerous disease, this dangerous viral disease, COVID-19, is gradually increasing. So we all should be aware, we all should be cautious about our health. Keep your health well and maintain yourself every day. Try to obey the COVID rules or guidelines by the government, which instructed to us, because life is fast, then passion, occupation, etc. Definitely, there are many researchers trying their best to invent a vaccine all over the world. But no one can get success. The news by media, print media, electronics media, just highlighting about the vaccine, but that is not right. Till now, no vaccine is invented, but
research work to find out the vaccine, a safe vaccine. All are trying in the world. Each and every country trying their best to invent the vaccine. In my opinion, that it is the power of God to give a lesson to the human society. भगवान को मनीष तुच्छ मन कला भगवान बा ईश्वर बा अल्लाह हो से जीशु हो मोहम्मद हो बा साई बाबा हूँ कि जेकोसी प्रकार इटर्नल पावर हूँ सुप्रीम अथॉरिटी को मनीष निज हाथ खेलना करके सजेला सी रहिला आलिशान बंगला एवं टॉप मोस्ट रूम रे बेडरूम रे मास्टर बेडरूम डिलक्स सुपर बेडरूम बा सूट जहाँ को कह जाऊ से गुड़ार रहिला मनीष भगवान को लेकिन रखिला ता घरर सीढ़ी तले ता घरर पानी टांकी कड़र ता घरर थाकरे नचे ता घरर कंटा मारिकी कांथ भगवान बोली गोटे जिनस मनीष भूलीगला ईश्वर बोली गोटे जिनस मनीष भूलीगला मोर अनुमान मु जहाँ फिल करी किछि मास भितर कोविड-19 जो तबले ब्लास्टिंग हैला बा स्प्रेड कला ये गोटे महामारी जोटा को कि हजार हजार किलोमीटर दूर बाहर की समग्र विश्व रे चल सृष्टि कला तेणु ये भगवान निश्चित एथिरे मनीष समाज को चेतवाई किसी गोटे हाथ रही नहले ये कदापि संभव होता नहीं मनीष चेतिलाणी मनीष जानिलाणी बुझिलाणी छातीर गेंजी रे ठाकुर फोटो करके पिंधिबे गामुछा लुंगीर ठाकुर फोटो हाँ आउ मंदिर को जीवा परिवर्ते बेसी गले तमर माने रिसेप्शन पार्टी डांस पार्टी मॉडर्निटी रे पूरा बुड्डी रहिला मनीष कर्म जंजाल भितर पैसा पाई सकाळ पाखर बाहरी जाइए राति सारा माने पैसा कौड़ा आसो सबू नेग्लेक्ट कर ईश्वर भगवान को भूलीगला केते बेले बा टिके जदि मने पड़ला भी समय बाहर करके नमस्कार बा प्रणाम टिके करिवो सी भगवान को सेतिकी भी कलानी आमे मनीष से दायी पिला माने ये सब जो घटना घटी आज मनीष को सबक शिखेवाई घटी हाँ मैन इज ए रेशनल एनिमल बट मैन इज ए फैशनल एनिमल ना हाँ मनीषटा आज फैशनल एनिमल ही रेशनल परिवर्ते फैशनल हो किमिति बेसी दिन बंचब से रास्ता बाहर करने माने अमरत्व लाभ मध्य रास्ता बाहर करा मनीष तेणु बर्तमान विज्ञान फेल मारी वैज्ञानिक फेल मारी गवेषणा फेल मारी गवेषक फेल मारी कौन सी प्रकार आज की 6-7 मास हो गला गोटे वैक्सीन इन्वेंट हो पारो नहीं तेणु भगवान जो दिन चाहिए से दिन जाकि वैक्सीन गोटे बाहर आ समस्ते से वैक्सीन को पाइबे पाइला परे जाकि ये रोग माटी जीव आपे आसिक आपे
जेते चेष्टा कले भी सी कहीं कौन सी प्रकार ये मात्र से जीव ना। सो गॉड प्रपोजेस, मैन डिस्पोजेस। भगवान मनीष को सब मंगल चिंता कर सब साहाय्य करती कि मनीषटा माने आमे माने तांको अवहेला कर जो आज आमको शिखीदेवा लगी भगवान प्रकृत जीवन कौन, धन दौलत कौन, गाड़ी बाड़ी कौन, संसार कौन, परिवार कौन, किसी नुहे। मनीष जीवनटा तुच्छ। कहीं बड़ बड़ लोक ए फेल मारी कोटिपति, करोड़पति, आरड़पति, मिलेनियर जे मान कह वर्ल्ड बड़ बड़ मिलेनियर चलीगला आखि बुझीदेले। हाँ ये भली ना ये बड़ को छाड़ ना ये सान को छाड़ ना ये मध्यवित्त को बा मध्या को छाड़। नो वन विल रेस्क्यू इन फ्रंट ऑफ दिस acute viral disease COVID. So pray God that as soon as possible God will bless us and we will soon rescue from acute viral COVID disease. Okay, thank you. This is the instruction for you. So now you are all waiting for English class. Many thanks to you that you are very much all interested for your English class. During this year, you know, the students of this college have got very top mark in English. No one has plugged. Any student has not plugged, has not failed. Specially only one subject, that is English. So I pray to God that it is His blessing to me that I could do my best for my dear students. Okay, students, you have already known about your course, which is now already squeezed. In prose, you have to cover my greatest Olympic prize, which I have already taught you. Then second prose, on examination, it is also taught by me. And third prose, the portrait of a lady, this is also taught by me to you in your previous classes or before the suspend of class due to COVID. Okay. Then in poetry section, you have to read the first poem, Daffodil, second poem, the Ballad of Father Gilligan, and third poem, A Psalm of Life. All these three poems also been taught by me, also finished by me, you know. But as you are all now at your home, so again I want to remind the topic. Today we will read the first topic, my greatest Olympic prize. The first topic, which is in your course, my greatest Olympic prize. Okay. Jesse Owens is the writer, you know very well. Jesse Owens is the writer of this topic, and Jesse Owens has highlighted his own experience in this topic. Okay. Who was Jesse Owens? Jesse Owens was an American track and field athlete
who specialize in sprint and long jump. So, first question, who was Jesse Owens? I have already informed you, Jesse Owens was an American track and field athlete. Okay, then what was his specialization? His specialization was sprint and long jump. He participated in the 1936 Summer Olympics in Berlin, Germany, where he achieved international fame by winning 4 gold medals. 1 gold medal from 100-meter race, and another gold medal from 200-meter race, another gold medal from long jump, and another gold medal from 400-meter relay race team. So 4 gold medals he won in the Summer Olympics, which was held in Berlin, Germany. So then what is Olympic Games? Olympic Games is the world's foremost sports competition featuring summer and winter sports, in which athletes from all over the world participate in a variety of competitions. Olympic खेल काहाकू कहते? Olympic Games होती विश्वर सबुठु अधिक खेल मानकर समाहार, जहाँकि ग्रीष्म आ शीत ऋतु रे खेला जाइता। आउ एथिरे पृथ्वीर विभिन्न देशर विभिन्न आड़ू खेलाड़ी माने विभिन्न खेल रे भाग नहीं थांती, विभिन्न प्रतियोगिता रे पार्टिसिपेट करते। So the Olympic Game is the world foremost sports competition featuring summer and winter sports, in which athletes from all over the world participate in a variety of competitions. So you have to first know the introduction or warm up of the topic, because there is something, there is some answer, valuable answer for you. But the students just reading the passage, reading the topic, reading the unit, and they just think in the passage there is the answer, and they just copy the answer and paste it in their answer paper. That is not the right way for getting highest mark. You have to write in your own language. So if you want to write in your own language, so you will have to read the background of the topic, the warm up of the topic, the introduction of the topic repeatedly. You have to competent. You have to be expert in the whole topic, for which you can write the answer in your own language, so you can get the highest mark. Many times, many students complain that I just wrote the right answer, but I did not get the right mark. But no, those students, when they get their answer book from the council in Xerox, so they say one thing, but in their answer paper they wrote one thing. They just write one thing. Their opinion about their answer paper is totally negative. So, you students, it is my advice to you, first you just clear about the topic, you try to use the word and sentences in your own language, then you will get more and more marks. Okay. So, what is Olympic Games? I have already told you. Then Jesse Owens in this essay
shares his experience of 1936 Summer Olympics held in Berlin. So the question is, what is described in this topic? So in this topic, it is described about Jesse Owens, about the experiences of Jesse Owens in 1936 Summer Olympic held in Berlin, Germany. At that time in Germany, Hitler was the ruler. So patriotic feelings were running high during this time. However, Jesse Owens did not bother about it because he trusted in his abilities. He tells a stunning story about forging a lasting friendship with a German, putting differences aside for the love of the game. यही जो प्रबंध पढ़ुच एथिरे जेसी ओवेन्स 1936 मसीहा जो ग्रीष्म ऋतु जर्मानी बर्लिन रे ओलंपिक खेल होता जो समय कि जर्मानी हिटलर बोली गोटे शासक थिला जानिच तुम्हें एकछत्रवाद शासक जो समय कि जर्मानी से एकछत्रवाद चलैथिला एवं पेट्रियोटिक फिलिंग्स बा जहाँ को कहुच्छी स्वाधीनता चेती मनोभावना एकछत्रवाद मनोभावना को नहीं समस्त इन्स्टिगेट करुला प्रवर्तौला एभली सिचुएसन रे किमिति जेसी ओवेन्स गोटे निग्रो जाति रे निग्रो अमेरिकीय लोक सिटीजन ऑफ अमेरिका जी कि अमेरिका रे सिटीजनशिप को नहीं थे जाई समय खेली he did not bother आदौ से विव्रत हो नथिले because he had the trust in his ability तांका दक्षता पर तांकर विश्वास थिला भरोसा थिला जेते सो in this essay he tells a stunning story about forging a lasting friendship with a German, putting differences aside for the love of the game. खेलर भल पाइबा को नहीं किमिति गोटे जर्मान खेलाड़ी सहित तांकर बंधुत्व होइछि सेई जो रोमहर्षणकारी कहानी सेई जो दरदपूर्ण कहानी से वर्णना कर नाउ कम टू द यूनिट ऑफ द टेक्स्ट एंड नॉट हाउ ओवेन reached to the performance of the his trial. It was the summer of 1936. The Olympic Games were being held in Berlin. At that time, Adolf Hitler was the ruler, who insisted that his performers were members of a master race team, and nationalistic feelings were running at high. 1936 मसीहा छुआ ग्रीष्म ऋतुर समय था ओलंपिक खेल रे भाग नापी बर्लिन गले आमर जेसी ओवेन्स सेतेबेले जर्मनी एकछत्रवाद शासक था आडल्फ हिटलर तांका ना जहाँ ना तुम भल भाव जाच तांकर जो खेलाड़ी बा परफॉर्मर्स मान को नहीं कि सी गोटे टीम तैयारी करथिला गोटे दल तैयारी करथिला हिटलर जार नाम देथिला मास्टर रेस टीम आउ समान को भीतर गोटे नेशनलिस्टिक फीलिंग एक छत्रवाद जो भावना ताको बहुत से ग्रह कर देथिला So, Jesse Owens reached there. He knew about the system of Hitler, but he was not worried about all this. He was not worried about the evil thinking of Hitler, because he was trained, suited and disciplined himself for 6 years.
with the games in his mind. While he was going over on the boat, all he could think about was taking home one of or two of those gold medals. Especially his eye, his willingness, his desire was on the long jump. Because a year before, as a university student, he had set the world record of 26 feet 8.1 by 4 inches. Everyone kind of expected him to win that Olympic event, hands down. Jesse Owens, एक छत्रवादी शासक जर्मानी हिटलर एभलिया कार्यकलाप को देखी आदौ से दुखित है नाही कहीं ना से उपयुक्त तालीम प्राप्त थिला परिश्रमी थिला श्रृंखलित थिला दीर्घ 6 वर्षर अभिज्ञता को नहीं खेलर जो अभिज्ञता को नहीं निज मन जितेबले बोट्रे से जाऊ था जर्मानी बर्लिन अभिमुखे अमेरिकार सेतबेले से चिंता करथिला जहाँ भी हो घर को माटी को फेरिबा बेले को निज मातृभूमि को फेरिला बेले को निज घर को फेरिला बेले को निज माटी को फेरिला बेले को गुटे हो कि दीटा हो गोल्ड मेडल मु निश्चित से ओलंपिक गेम रे जीतिकी नहीं फेरी स्वतंत्र भाव में जेसी ओवेन्स नजर थिला लॉन्ग जंप जीती गोल्ड मेडल जीतिया कहीं वर्षे पूर्वर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थिला बेले सी लॉन्ग जंप डेईकी वर्ल्ड रिकॉर्ड करथिला देइथिला 26 फीट 8.1 by 4 inches. So everyone expected him to win that Olympic event, hands down. समस्त आशा रखी निश्चित भाव जेसी ओवेन लॉन्ग जंप रे समस्त हरईदेव समस्त हैंड्स डाउन कर जीत बट जेसी ओवेन वाज इन फॉर ए सरप्राइज सब बेले मनुष्यटा जहाँ भावे सेटा मिल न थाए किछि गोटे असुविधार सम्मुखीन हुए बाधा विघ्न आसे ताकू जदि अतिक्रांत करे ताल जाकि जहाँ गोटे से जीतबार आशा आकांक्षा लाभ करे. So to reach the goal point, all types of impediments have to cross by us. सफलतार चूड़ारे अधिष्ठित हेबाकू हेले समस्त प्रकार बाधा विपत्ति को अतिक्रम करने पड़ो. कीप पेशेंस डेंजर मस्ट बी गन. धैर्य धर विपद निश्चित कटिबो. कहीं धैर्य धरले सबु समस्या समाधान हो पारि. अधैर्य हेले हाई बीपी हबो, डायबिटीज हबो, विभिन्न प्रकार रोग आंठू गंठी अंटा मुंड पिठी सबू कड़मड़ होगी बिंधा आरंभ कर. स्नायुतंत्र रे त्रुटि देखा एवं अल्प बयसरे जड़े वार्धक्यता ग्रास कर. तेणु धैर्य से दरकार. धैर्य जो मानकर धैर्य नहीं पेशेंस नहीं से माने कर दुनिया रुक जाकी बचो से माने. तेणु से नहीं कहती संस्कृत रे गोटे कुहा रही जहाँ तुम भल भाव जानिच बिगिनिंग क्लास रु पढ़ी आस कक स्नान बकध्यायी गृहत्यागी स्वान निद्रा तथैव च. सबु बेले स्मार्ट बी स्मार्ट ऑल टाइम. निजको सबु बेले स्मार्ट रख
कौन सी प्रकार चिंतारे भांगी पड़नी बापा गाल देले गाल दियो किसी भल पाई गाल दी माँ गाल देले गाल दियो तुम किसी भल पाई गाली दौच हाँ भाई गाली देले कि पिटिले आकट कले गाली दियो भल पाई तुमको गाली माने कहउछन सबू गुड़ाक तुम पॉजिटिव थॉट रे नियो हाँ यू हैव टू receive all types of threatenings towards you by your family member in a positive way, not in a negative way. देखियो तापर समस्त कहबे जे तमे बहुत भलो पिला तम घरर तमे जने भलो झियोटे कि भलो पुओटे आउ बदमाशी करिवो मोबाइल धरिकी जाइकी को पुल उपरे बसिवो कि बाड़ीआड़े खट पकई बसिवो वर्तमान छुट्टी बंद अच्छी कॉलेज बंद कॉलेज शट डाउन क्लास शट डाउन टीचर शट डाउन एरिया शट डाउन चारिआड़े लॉकडाउन आमे बर्तन पूरा नील आकाशर चढ़ई होगी आम घर भितरे ढुले ढुले खाईकी खाली शुवा टीवी देखिया मोबाइल देखिया हाँ नुची नुचा कि तेणे फोन करिया हाँ कौ सांग को फोन करिया कौन कि आउ केमिति अच्छु हाँ खाई पीकी ढोल बजाऊचु ना नहीं यही भाया यात्रा जी करी बही पत्र पाठ इत्यादि को सब बाद दे देछ तमठू भली बुका आ बुकी आ दुनिया रे कहीं नहीं बुझ जान हाँ कथार अच्छी देसी करनी ऐसी भरनी हाँ एजी सो यू री सो के नाउ कम टू द टॉपिक दैट जेसुएंस वाज इन फॉर ए सरप्राइज all of a sudden when Jesuits reached the land of Berlin, Germany, he was surprised. Why? Because he saw a tall boy hitting the pit at almost 26 feet on his practice place. गोटे डेंगा आईकी खेलाई जर्मन प्लेयर जर्मन लंग जंपर जो प्रैक्टिस लीव है आगे तो प्रैक्टिस लीव हुए ना नेट प्रैक्टिस जमी क्रिकेट रे हुए जमी ओलंपिक खेल पूर्व प्रैक्टिस से प्रैक्टिस डिया 26 फुट एकाथर से डेला ता डेवा देखिकी ये पूरा फ्यूज कभी भी मत समझना कि हमसे बड़ा कोई नहीं निजे थारु कहीं बड़ नहीं ये कथा आदु भाव नहीं यू डोंट फील योरसेल्फ दैट यू आर द सुप्रीम एमंग ऑल यू आर द टॉप एमंग ऑल नो समस्त ठारू भी किए तम ठारू समस्त ठारू समस्त को भितरे भी बहुरी माने आहरी अधिक प्रतिभा बड़ बड़ प्रतिभा रही सो वी शुड नॉट बी प्राउड अबाउट अस अबाउट आवर सेल्फ आम निजी को निजे गर्व करवा अति आदौ अनुचित बुझल कहीं संस्कृत रे गोटे बाणी अच्छी हाँ कौन अति दर्पे हतालंका अति माने च कौरवा अति दाने बलिर्बद्ध अति ही सर्वत्र गहितम हाँ अतिटा भल नहीं जाओ सो व्हेन जेसुएंस वाज जेसुएंस सो a tall boy hitting the pit at almost 26 feet, he was surprised. He was startled. That player was a German long jumper named Louis Long. Jesuits was informed that
Hitler had kept him under rape, evidently hoping he would win the jump. Then Decian supposed that if Long means lose Long won, it would add some new support to the Nazis' Aryan superiority theory, which was implicated by the crooked ruler, by the nationalistic, patriotic ruler Hitler. After all, Decian was a Negro, so a little hot under the collar about Hitler's ways, he determined to go out there and really show Darfara means Hitler, the other name of Hitler, that is Darfara, and his master race, who was superior and who wasn't. घटना कौन है ना जदि लुज लंग जीति जीव ताने हिटलर जो नाजी आरियन सुपीरियरिटी थियोरी इम्प्लिकेट करची नाजीवाद सेटा कौन हम ना आहरी से सपोर्ट पाई आहरी अधिक एक्टिवेट हो माने जो क्षमता पावर आहरी बढ़ी यहीटा भाविकी रागी मन मन बढ़ाई विरक्ति रागी गला निग्र लोक ना भारी जो रागी गला तापर निष्पत्ति नेला डिटरमाइंड है कौन कला ना चलला जे डरफरार और हिटलर अन्य नाम हूँ डरफरार सी जो तार मास्टर रेस टीम करी को प्लेयर रखी एवं से किए सुपीरियर अच्छी आउ किए नहीं who was superior and who was inferior, who was strong and who was weak, ताकू खुजी बाहर करने पाई जेसियन चेष्टा कला जाओ the first unit of the topic already been completed. So students, tomorrow we will read about the grammar part, that is in your course passive voice. I have already taught you about active voice and passive voice, but tomorrow we will read about passive voice. बाच्य परिवर्तन और voice change रे active voice रु केमती passive voice हुए तार टेक्निक तार फॉर्मूला रोल्स सेगुड़ा सब आम शिखा मु टास्क देवी से सब टास्क तुम करो. ओके, यू लिव हैप्पीली. वेरी सुन वी विल मीट with each other in the classroom. Thank you.